हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड दी ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. And it's another day at the games today. We have a special one coming out today. एक खास गेम है, बहुत ज़बरदस्त टकराव है आज का, उसके ऊपर बात करेंगे. But before that, let me bring in my panelists, my esteemed guests in the pavilion. With me, I have three former Pakistani captains. First up, Mr. Dependable, the man who kept the Pakistani batting order glued together when he was president, one of the most successful test captains of Pakistan's test cricket history. I've got Misbah Assalamu alaikum and good afternoon, Misbah. Walaikum assalam. With that, I've got one of the finest wicket keepers, a great runner between the wickets, a finisher of games, a man of crisis, and the silver fox of the pavilion, Moin Khan. Assalamu alaikum and good afternoon, Moin. Walaikum assalam. Good afternoon. Assalamu alaikum, everyone. And finally, I've got the cricket royalty himself, the Sultan of Swing, the king of all-rounders. I've got the shiny, bright, happy Wasim Akram. Assalamu alaikum and good afternoon, Wasim. Assalamu alaikum ji. Good afternoon, everyone. All right, आज आपके लिए एक बड़ा मुकाबला है जो हम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं. This is the match that is coming up for you on your screens. Let me show you this. We're taking you all the way to Lucknow, जहाँ पे आज India will clash with England. That's the defending champions, and India, the unstoppable force of this World Cup so far. They have 5 games, 5 wins, and they look immaculate. England struggling, but फिर भी England की टीम एक ऐसी टीम है जो किसी भी वक्त bounce back कर सकती है, and that they are the defending champions. So this is going to be a great game of cricket in Lucknow. But उससे पहले जरा नजर डाल देते हैं कि कल रात को क्या हुआ था. कल 2 मैचेस से आपको पता है कि पहला मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का था, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता. It was a great game of cricket that we saw. Australia batting first 388 and Travis Head, man, Travis Head नहीं थे, Travis Set थे, क्योंकि आते साथ ही उन्होंने जो है वो बम्बारमेंट शुरू कर दी थी न्यूजीलैंड के बॉलर्स के ऊपर. But it was a great fight back from New Zealand. They put up a great chase, and Ravindra, that young man, he is definitely making a mark in this World Cup, and definitely will leave a big mark on cricket history when he gets done, whenever that is. Australia winning this one by 5 runs. दूसरा मैच नेदरलैंड्स बा मुकाबला बांग्लादेश था. ये मैच जो था ये भी बड़ा ज़बरदस्त गया. एवरीबडी थॉट कि बांग्लादेश जो है वो ये मैच जीतेगी, जो कलकत्ता में था, लेकिन ऐसा ना हुआ. नेदरलैंड्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया. 229 रन उन्होंने लगाए. उनके कप्तान एडवर्ड्स ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली. And well, it looked like 229 was just not a power score, and that Bangladesh should be able to get it, but unfortunately it was not. It was a debacle. Bangladesh batting collapsing there for 142. Mikran picking up those 4 amazing wickets, a great spell by him. And in Netherlands won this one by 87 runs, a big margin there. By no means has Netherlands in this World Cup shown that they are an underdog team. They've shown that they can take on some of the best teams, test playing nations, both of them. And with that, आइए नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे. पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है ये अब आपके सामने हम रख देते हैं. ICC Men's World Cup 2023 का ये है पॉइंट्स टेबल. South Africa sitting right on top now. They've played 6 games, 5 wins, 1 loss to that Netherlands team. But their net run rate is 2.03. That's why they're sitting at number 1. India have played 5 games and won all 5 of them, and are sitting at number 2 with 10 points. So they and South Africa both have 10 points each. New Zealand जो है, they are now the 3rd place now with 8 points, and Australia trailing behind them at 4th place, also with 8 points. Sri Lanka at number 5, Pakistan at number 6, Afghanistan at number 7, Netherlands at number 8, Bangladesh at 9, and look at that, the defending champions England right at the bottom of the table. Now, मैंने कुछ बोला था आपको कि जो bottom teams हैं उनके लिए qualifying का सिलसिला होगा. So let me clarify that. 2 things that I've just been informed overnight. एक तो ये कि जो 2 bottom teams होंगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए से आउट हो जाएंगी. सो चैंपियंस ट्रॉफी है उससे आउट हो जाएंगी, बट पाकिस्तान के लिए कोई खतरा नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान इज द होस्ट कंट्री रिमेन्स इन द चैंपियंस ट्रॉफी. सो दैट्स वन थिंग, एंड इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द 2027 वर्ल्ड कप. यू नो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बी. डिफरेंट फॉर्मेट होगा 2027 वर्ल्ड कप का. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेम दैट वी हैव हियर टुडे. वी हैव ए डिफेंडिंग चैंपियन व्हिच इज हर्टिंग, and they want to make some kind of impression in this World Cup. And then we have a unstoppable, untamable force India. Now let's talk about that, Wasim.
For England, a lot of troubles, and they'll have to play very good cricket today. Yeah, do or die game, every game from here onwards. If they win all 4, they played 5, they won 1, they only got 2 points, like you just explained, कि सबसे नीचे हैं टेबल पे, being a defending champions. And अगर अगले चारों मैच भी जीते हैं, जो कि बड़े मैच हैं, आज is one of the biggest of all against one of the favorites, India. They get to 10 points if they win 4. अगर 10 points के बाद फिर lot of ifs and buts, and if we see India and South Africa, they already on 10 points. So do or die for England. If they win today, they might have an outside chance. That's the hope the skipper has to give to his team. But overall, their performance has been below average. I think इसकी reason जो main है, जो हमने पिछले 2-3 हफ्ते से हम लगे हुए हैं, जो stats देख रहे हैं कि इनके main players ने बड़े वनडे मिस किए हैं 2-1 सालों में. जो रूट ने 23 जो इनका मेन प्लेयर है जिसको रिक्वेस्ट की है, बेन स्टोक्स, ही मिस्ड अबाउट 29 ODIs. So maybe that could affect them because they didn't took them these ODIs seriously. They had their young team playing against Ireland, I think just series before the World Cup in England. So that could be the problem as well. And I think Mark Wood is not making an impact जो जिसके लिए वो लाए थे. Sheer pace, तंग करेगा, but he's going for millions of runs in his first spell. So he's not creating any pressure. And I reckon this other guy, Gus Atkinson, he bowled well in the last game. That's what Misbah was mentioning as well. He was very impressive. I think it's his time to be in playing 11 today. The way Mark Wood is bowling. Yeah, the way Mark Wood is bowling, a lot of troubles for England, Misbah. Moin Ali is also not performing with bat or ball. Main reason, I think, a lot of players जो जिन पर डिपेंड करते हैं, दे आर आउट ऑफ फॉर्म. किसी भी टीम के साथ हो सकता है, और इंग्लैंड अनफॉर्चुनेटली एट द रॉन्ग टाइम उनके जो मेन प्लेयर्स जिन पे वो डिपेंड कर रहे थे, वो सारे आउट ऑफ फॉर्म है. राइट. और अभी तक वो राइट कम्बिनेशन समझ नहीं आ रही, इस वजह से उनकी कि मेन हमारी जो बैटिंग हम उस पर डिपेंड करते थे कि 400 रन्स करेगी. 400 छोड़ें, वो इतने रन्स भी नहीं हो रहे कि जहाँ पे वो फाइट पुटअप कर सकें. और आज जो एक बड़ा चैलेंज है उनका, फिर एक ट्रिकी पिच पे मैच है जो प्रीवियसली हमने लखनऊ में देखा कि यहाँ की पिच बैटिंग ट्रू बैटिंग पिच नहीं है. यहाँ थोड़ा आपको डिफरेंटली खेलना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है. और मैक्सिमम यहाँ पे जो रन्स भी हैं वो 260 270 रन्स हैं. वो स्ट्रोक मेकर्स के लिए इतनी ज़्यादा को हेल्पफुल नहीं है पिच. सो दैट्स अनदर बिग चैलेंज फॉर देम प्लेइंग अगेंस्ट द टॉप साइड्स इन लखनऊ. राइट. मोइन, ये अभी वसीम ने पॉइंट आउट किया कि शायद इतनी ओडीआई क्रिकेट नहीं मिल रही इंग्लैंड के मेन प्लेयर्स को, या वो नहीं खेल रहे हैं. वो जो आपने कहा कि दूसरे उसके रीजंस हैं. 215 से देखें, जो 215 में डिबैकल हुआ इंग्लैंड के क्रिकेट के साथ वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम वाइट बॉल के लिए एक पूरा उन्होंने एक सेटअप बनाया, ये किया, फिर 219 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, और फिर अचानक ये वाली सूरत हाल बन गई. ये क्या ट्रेजेक्ट्री नज़र आ रही है आपको? आई थिंक कल थोड़ी सी प्रेशर की बात कर रहे थे. एट टाइम्स होता है, आप प्रिपरेशन तो बहुत करते हैं, बट आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करके आते हैं. तो आई थिंक राइट टाइम पे क्लिक होना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पहले जो इम्पैक्ट क्रिएट करना था इंग्लैंड ने, वो शुरू के मैचेस में बिल्कुल नहीं कर पाया. और वहाँ से टोटली वो अभी तक अपना कॉम्बिनेशन ही ढूंढ रहे हैं कि अब किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं. आई थिंक प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया सबने. और जो मेन बैट्समैन, जैसे अभी मिसबा ने कहा, जिनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि हम 400 करेंगे और ये हमारी बॉलिंग जो है 400 ओवर, लेकिन बिल्कुल सही बात की उन्होंने कि वो टोटल भी नहीं कर पा रही है बैटिंग, जिससे एक्सपेक्टेशंस थी कि एक रीज़नेबल टोटल करेंगे, उसको हम कम से कम अपनी बॉलिंग को देंगे और डिफेंड के. ओवरऑल एक प्लेयर लाइक, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलिंग हो, किसी ने भी वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी. उसकी मेन रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है कि इन पिचेस के ऊपर बिल्कुल इंग्लैंड के किसी भी प्लेयर को आइडिया नहीं हो कि किस तरह खेलना है. हमने दे जस्ट केम एंड उन्होंने फ्लो में खेलने की कोशिश की है, बट इनिशियली मैचेस में विकेट्स जब गिरती हैं और वो जो प्रेशर आता है, उस चीज़ से बाहर ही इस वजह से नहीं आ पा रहे. तो दे आर लुकिंग फॉर अ गुड पिच, बट अनफॉर्चुनेटली आज की पिच जो भी मिसबा ने कहा थोड़ी फिर ट्रिकी होगी. एंड अगेंस्ट यू प्लेइंग अ टॉप टीम ऑफ द टूर्नामेंट ऑलमोस्ट, जिनके पास बेहतरीन स्पिनर्स है. तो आज फिर इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल इम्तिहान है, मैं समझता हूँ. ऑलराइट, एक और मुश्किल इम्तिहान है, और इस वक्त हमारा इम्तिहान है, क्योंकि हमें लेनी है एक ब्रेक. विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक. डोंट गो अवे.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड ARY's ऐप कंटिन्यूड कवरेज ऑफ दी ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 और आज बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है लखनऊ में. हम देखेंगे इंडिया वर्सेस द डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड हु आर रियली स्ट्रगलिंग. ब्रेक पे जाने से पहले हम इसके हवाले से बात कर रहे थे. विद मी इन द Pavilion आई हैव गॉट Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. Shoaib Malik will be joining us later tonight in the post match hopefully. Yeah, we were discussing before the break, Fakhar, that England team के main players ने कितने ODI मिस किए हैं from 2019 World Cup till this World Cup. So I have the stats with me. Mark Wood ने मिस किए हैं 34. He only played 8. Ben Stokes missed 29. Chris Wokes missed 27. Joe Root missed 23. David Milan missed 22. Willie 21. Karan 18. Baistro 18. So they missed a lot of ODIs. And the guy who played the most ODIs for England in last 3-4 years, Jason Roy, they dropped him. So उससे भी फर्क पड़ा होगा मेरे ख्याल में इनकी कॉम्बिनेशन में. वो बड़ा अग्रेसिव प्ले मोइन के साथ तो उसने काफी काम किया है. So here's my question to you, Wasim. Why do you think they didn't play these many? I mean, ठीक-ठाक numbers हैं. Yeah. So why were they missing? Was there injuries थी या rotation policy थी? What was they going on either there? rested or they either got injured. There was no plan. They probably weren't taking the ODI seriously. They were Right. more focused on probably shorter format and red ball. शॉर्टर फॉर्मेट से भी ज़्यादा टेस्ट पे उनका Test पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस है, focus तो था. उस वजह से जो टेस्ट प्लेयर हैं वो मेनली उनके वनडे मिस करते हैं और वो नए प्लेयर्स को चांसेस देते रहते हैं. फिर T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा वो भी है. तो दीज आर द रीजंस. बट वो समहाउ अगर आप इकट्ठे नहीं खेल रहे तो रीज़न हो सकती है कि वो एक कम्बिनेशन बनते बनते अपने रोल्स उस तरीके से Define होते होते टाइम लग जाता. तो ये भी एक रीज़न. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि फॉर्म बड़ी इम्पॉर्टेंट है. जब आप ऐसे टूर्नामेंट में आते हैं, अगर आप आउट ऑफ फॉर्म आपके मेन प्लेयर हो गए हैं और ऐसा फ़ौरन आपके मैचेस हैं, 2 मैचेस जाते हैं, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक. एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ. हमने पहले भी इसके ऊपर गुफ्तगू की थी. नासिर हुसैन का एक इंटरव्यू आया था जब ये पिछला मैच हारे थे. ग्राउंड में उन्होंने खड़े होकर इंटरव्यू दिया था पूरे का पूरा. उस पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे. उन्होंने कहा कि एक तो वो लोग जो तमाम लोग जो इंग्लैंड के फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट्स जस्ट अटर नॉनसेंस. ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फॉर दैट कि ऐसे नहीं है, बिकॉज इसी स्ट्रक्चर से एक आपको चैंपियन टीम मिली थी जो T20 World Cup and 50 over. Yeah, you know, so the greatest white ball team came about because of that structure. That was number one. Number two, they said कि अगर ये कहना कि जी चूंकि आप ODIs नहीं खेलते और सिर्फ 2020 खेलते हैं तो इसलिए आप नहीं खेल रहे. कहना well, विराट कोहली is an example for you. Rohit Sharma is an example for you. They play a lot of T20 cricket and they don't get to play a lot of one-day cricket either. But they're fine with it. So he was very honest. But he was consistently going back to the thing कि फॉर्म की बात है. और उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट की एरा के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया कि इंग्लैंड की जो वाइट बॉल क्रिकेट की एरा है, मे बी ये जो 11 लड़के हैं जो इस वक्त टीम में मौजूद हैं, दे विल बी रिमेंबर्ड for being one of the greatest white ball cricket team, but maybe their time is coming to an end. And with that, we have a very special package that just talks about this. Shocked and a huge low point. Joss Butler के अल्फाज थे वो जो उन्होंने बोले वहाँ पर. And then of course Chris Wokes saying we are hurting most as players. But let me bring this to you, Wasim. Nasir Hussain, they're saying that it feels like an end of an era. It doesn't mean कि सारे players जो हैं वो फारिग हो जाएंगे, but ये है कि कुछ को आपको change करना पड़ेगा because it's not the Ian Morgan team that he built. Yeah? बिल्कुल, huge statement by Nasir Hussain, and he does know his cricket as a player. 100+ test matches, England captain, one of the best commentators. You see, that sort of mindset we as a nation, as a cricket-loving nation, has to adapt. अगर हम या मोइन या मिसबा या आप कोई बात करते हैं या शोएब मलिक, कोई भी क्रिकेटर कोई ऐसी बात करे तो सारे पीछे पड़ जाएं. बिल्कुल ऐसे ही. टॉक्सिक बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये बड़े. क्रिटिसाइज नहीं सहना. अगर आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही तो अच्छा नहीं कर रही तो क्रिटिसाइज ही होगे ना. If they're doing well, then they're doing well, and that's what exactly Nasir said in his statement. Actually, Nasir Hussain तो फिर भी बहुत I think soft on his words. वो जो English media है उसमें काफ़ी लोगों के काफ़ी strong worded articles भी जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में आए हैं, which have been around there. With that, we're going to take a break on the Pavilion, but when we come back, we get closer to the action. Don't go away. Keep watching Gay Sports and the ARY's app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the ARY's app. With me in the Pavilion, I've got Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. And right now, we're talking about the game that is coming up ahead in Lucknow. It is India clashing with England, and we have a match feature for you. Let's take a look.
But there you have it. That's the match. It's England versus India. हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे, इंग्लैंड की जो ट्रबल्स हैं उसके बारे में बात कर रहे थे और बहुत सारे मसाइल हैं इंग्लैंड की टीम के अंदर and I'm hopeful that they'll get their act together. But let's talk about this team India because they're unstoppable right now. They are just going strength to strength. कोई डिपार्टमेंट कोई वीक है तो बता दें प्लीज आप लोग. टॉस भी नहीं हार रहे. ये भी है. बंदा कवे तो की कवे. इसमें तो भी डांटे ना. And all the 5 games luck favors the brave, remember that. All the 5 games they won chasing. Yes. And I think it'll be interesting to see if they bat first, what sort of mindset they'll have, because there'll be a different kind of scenario situation for them, because when you're chasing is a difficult job, but they do it beautifully. They do, They are but the best chaser in the history of world cricket. but then Virat Wasim, Kohli. they also have the best bowling right now to defend any total that they put up. Like you said, all bases covered. All bases. एक तो भाई ये तो ज्यादती की बात है. All bases covered होना ठीक है, मगर ये तो कुछ ज्यादा ही over covering चल रही है. They have been planning it for They've years, been planning man. it, That's and it why shows. you can see the result. एक home advantage भी थोड़ा सा नजर आता है. No doubt they are a very good bunch of batters. Yeah. But spinners कोई ऐसे extraordinary spinners नहीं है. But जो आप conditions क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कुलदीप यादव और नहीं है, ये बात नहीं है. बट एक दूसरी टीमों से आप कंपेयर करें तो मोर और लेस बराबर की ही परफॉर्मेंस है. बट पिचेस इस तरह की मिलना उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. एंड देयर बॉलिंग विकेट टू विकेट. दूसरे स्पिनर्स को हमने देखा है बहुत से, हमारे अपने स्पिनर्स तो विकेट के मैं बाहर ये कह रहा हूँ ना मोइन, देयर बॉलिंग विकेट टू विकेट, तो बाकियों को रोका हुआ है क्या विकेट टू विकेट पे बॉल करने से? एवरीबॉडी हैज फॉर्म की बात भी होती है ना. बाकी इंग्लैंड की भी अभी इस वर्ल्ड कप से पहले टॉप की टीम थी, अभी हमने बात की वो आउट ऑफ फॉर्म है. तो आउट ऑफ फॉर्म हमारी टीम भी आउट ऑफ फॉर्म है. लेकिन नहीं सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म नहीं है. जिस तरह आपने नासिर को सुना, जो पैकेज हमने आज फीचर भी दिखाया, उसमें मेरा ख्याल है ये बात क्या वाज़ेह नहीं है कि उसमें कुछ अब वक्त आ गया है कुछ सीरियस चेंजेस का. एक्चुअली वर्ल्ड कप तो ऐसे ही इवेंट होता है, इसमें मेक और ब्रेक होती है. आपको कुछ प्लेयर्स आपको नए इंडक्ट करने पड़ते हैं, अगले टूर्नामेंट के लिए तैयारियां करनी पड़ती है. इंग्लैंड का एक और सेटबैक जो बहुत बड़ा है वो नज़र आ रहा है हमें. जो कप्तान है उनसे बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं हो रही. जॉस बटलर वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन टोटल टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ उन्होंने 93-94 रन किए हुए 5 इनिंग्स में. तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा इंग्लैंड के लिए सेटबैक. इट्स टेरिबल. इट्स स्टिल वो फास्ट बॉलर से आउट हुआ है, हालांकि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट मीडियम पेस एंड ऑल. एंड आई थिंक उसका नंबर थोड़ा वनडे में डिफरेंट बैटिंग है. T20 में तो एज एन ओपनर आता है तो ही इज अनप्लेएबल. सो वसीम, इंटरेस्टिंग. आपने अभी बात की कि इंडिया चेस करने में तो ज़बरदस्त है, बट कैन दे पुट अप अ टोटल, विल फाइंड आउट. बट एवरीथिंग डिपेंड्स. जिस तरह मोइन ने कहा कि विकेट्स के ऊपर बड़ा वो करते हैं, और आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट है पिच रिपोर्ट. Yes, वक्त हुआ है पिच रिपोर्ट का, brought to you by Onic. Wasim, is that a juicy pitch for spinners or what? It does. उसने बड़े पोलाइट तरीके से समझाने की कोशिश किया हमें संजय मांजरेकर ने. एक्स्ट्रा स्पिनर इंडिया को खिलाना चाहिए बिकॉज विकेट लग रहा है कि इट्स अ बिग टर्नर. यू कैन सी इट्स ड्राई, यू कैन सी देयर इज नो ग्रास एंड या इट्स काइंड ऑफ विन फॉर इंडिया. थोड़ा सा इंडिया के लिए भी एक प्रॉब्लम है. अगर हार्दिक पांड्या होते तो फिर ठीक, फिर तो अश्विन को 100% यहाँ पे खिलाने. शामी ने 5 आउट किए हैं. सिराज इज बॉलिंग. It's a difficult decision in that. We'll talk about that decision, but when we come back from the break, don't go away. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the Airwise app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप एंड नाउ कंटिन्यू कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023. आज आपको लेके जाने लखनऊ, जहां पे इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड है. उसके हवाले से हम लोग बात कर रहे थे. लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन टीम. मिसबा, दे हैव बीन अनस्टॉपेबल. ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, कोई डिपार्टमेंट वीक नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पे. और आपने कहा और तो और टॉस में भी नहीं हार रहे, वो उधर भी जीती चले जा रहे हैं. इनक्रेडिबल. व्हाट विल इट टेक फॉर इंग्लैंड टू स्टॉप दिस ऑनस्लॉट दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया? वेरी डिफ़िकल्ट. जब आपकी बैलेंस टीम होती है और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इन फॉर्म. राइट. चाहे उनका टॉप ऑर्डर है, उनका मिडिल ऑर्डर है, उनकी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, नया बॉल, मिडिल ओवर्स, स्पिनर्स का जो रोल है, फिर डेथ बॉलिंग जिस किस्म की कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है. जडेजा इज़ इन वेरी गुड निक. और फील्डिंग भी और फिटनेस भी अगर देखें तो इंडियन टीम की दूसरी टीमों से बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है. और इतनी मिस्टेक्स नहीं कर रहे, बल्कि अच्छे कैचेस ले रहे हैं और स्कोर रोक रहे हैं, जो इवन को 15-20 रन का डिफरेंस डाल रहे हैं वो हर मैच में. जब ऐसी सिचुएशन होती है तो देन
एक वाइब होती है टीम के अंदर, यू जस्ट फील कॉन्फिडेंट। आपको कोई बिल्कुल आपको पता है एज एन ओपनर कि यार नीचे जो है सारे इनफॉर्म हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, आपको फ्रीडम मिलती है। फिर विराट कोहली जैसा मिडिल में आके बैट्समैन खेलने वाला, उसको भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि नीचे केएल राहुल है और वो बड़ी अच्छी फॉर्म है। फिर जडेजा ने नीचे आके रन्स किए हैं। बॉलिंग में भी इसी तरह, एक तो उनका आप देखें नया बॉल जिस तरीके से बुमराह कर रहे हैं, और फिर डेथ ओवर्स में जिस तरह की बॉलिंग वो आके कर रहे हैं, मिडल ओवर्स में एक प्रॉपर प्लान है उनका। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में उतरते हैं। फिर आपके लिए वो परफॉर्मेंस उसी वक्त आपकी ख़राब होती है जब आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं श्योर नहीं होते, कुछ ना कुछ आपकी चीज़ वीक चल रही होती है, वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, आप वो फ्रीली फिर खेल नहीं सकते। दैट इज़ नॉट द केस विद इंडिया एट द मोमेंट। मिसबाह पॉइंट, जैसे अब बुमराह की बात कर रहा है मिसबाह, नए बॉल से उसने इस वर्ल्ड कप में अभी तक 20 ओवर किए हैं फर्स्ट पावर प्ले में। Right. His economy rate is 2.90. Incredible. And he's only conceded 8 boundaries in that 20 overs he bowled in power play. That shows the control he's got. Before I go into this next bit, I just want to ask you this, Wasim. How is it that any pitchon ke upar, how is it that Bumrah has absolute control of both the ball coming in and going away? But it's like almost at will he can, at will वो decide करते हैं कि मैंने किस तरह उसको घुमाना है. Literally at will. Because he has mastered him. Swing with the new ball. लेफ्ट हैंडर्स को वो राउंड द विकेट जाता है, वहां से बाहर निकालता है। उसने Tell us what is going on with his wrist. Is there something different? Let's look at this what we have here. ये जो बॉल करता है ना राउंड द विकेट से, गुड पेस, नाइस वेरिएशन, अ वेरी गुड स्लो बॉल, एंड ऑफ कोर्स यॉर्कर। और जिसको जब मिड ओवर में लाते हैं 1-2 ओवर के लिए, उसका प्लान ही ये होता है उनका कि गेट अस अ विकेट, ब्रेक थ्रू, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रेक थ्रू दिलाता है। वही जो फील्डिंग की बात कर रहे थे, दैट वाज अ beauty, slow ball, and then again the quick one that just snipped away. He uses his wrist beautifully, and ये जब मिसबा बात कर रहा था ना फील्डिंग की, आपका एक बंदा ये देखो, perfect yorker with good pace, bullseye. Yeah, what is going on with his wrist? Why is it that he has this much control on both sides? Because he's learned it, he's practiced it. He's come back from injury. Control. He's done everything basically. Everything. He came back out of injury after 1 year Asia Cup में पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ he looked, he never left the game. He's got the best slow ball in the business. We've seen his yorker. And coming back to the fielding, आपका अगर एक अच्छा फील्डर हो ना, अब एक से ज़्यादा होने चाहिए आइडियली, बट फॉर इंस्टेंस जडेजा इज देयर गो टू मैन एज अ फील्डर एट बैकवर्ड पॉइंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड पोजीशन है शॉर्ट फॉर्मेट में, वहाँ से गेंद जाने नहीं देता वो, उससे पूरी टीम, अब वो देख लें आयर को देख लें, शुभम विराट, दे ऑल दीज आर वेरी गुड फील्डर्स, टॉप फील्डर, 4-5 फील्डर उनके तेज हैं जो कि सारे हॉट स्पॉट्स पे खड़े होते हैं, और फिर आके 50 ओवर फील्डिंग करके 5 मैचों हमने देखा ये सारे बैटिंग भी 50 ओवर तक करते हैं। पाजान को पसीना भी नहीं आता है, पता नहीं एयर कंडीशन शर्ट आप आगे I don't know. I mean, it shows how fit they are. Yeah, we've got somebody who wanted to be like Wasim Akram, left-handed, but then he was told he doesn't have enough pace, and hence he became a spinner. This is a story he narrated himself. Right now we've got Kuldeep Yadav. Let's listen in. Kuldeep Yadav playing there at his home ground, and we are going to take a break. When we come back, there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द ARY's ऐप and we're getting very close to the action in Lucknow, जहां पर इंडिया बामुकाबला इंग्लैंड अब से कुछ देर बाद आपकी खिदमत में बराह रास्त आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आएंगे। With me in the Pavilion I've got Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. हम लोग बात कर रहे थे मोइन ऑफ इंडियाज कुलदीप के लिए हो कि हमने फील्डिंग भी उनकी कवर्ड है, उनके सारे बेसिस कवर्ड हैं, और वसीम ने एक अच्छा पॉइंट किया कि दे हैवंट batted first in this so far, आज की पिच को मद्देनजर रखते हुए do you think that if India wins the toss would they actually want to try themselves कि यार अगर हम पहले बैटिंग करके भी देख लें, अगर आगे के बड़े मैचेस के अंदर पिछले मैचेस में जो भी हमने देखा कि वो लोग चेस करके जीते, आज ऐसा मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली एक इजी मैच है इंडिया के लिए, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट ऑन द टॉप यहाँ पे, और इंग्लैंड को देखें तो बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल है यहाँ पे, उनके बैट्समैन स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जब आपको मौका मिल रहा है, नज़र आ रहा है कि पिच में टर्न नज़र आ रहा है, तो
नॉर्मली बैटिंग फर्स्ट ही की जाती है, करते भी, प्रेफरेंस भी करते हैं, क्योंकि लेटर ऑन चांसेस होता है अगर ड्यू ना हो तो टर्न होने का चांस ज़्यादा होता है। हमने इंडिया में देखा बहुत से ऐसे वेन्यूज़ थे जिनके ऊपर फुली कवर नहीं था ग्रास का, जिसकी वजह से बॉल इतनी ज़्यादा टर्न नहीं हुई। और कुछ पिचेज़ ऐसी थी जहाँ पे स्कैटर्ड थी ग्रास, वहाँ पे पैचेस ऑफ सैंड मड नज़र आया हमें पिच पे, जिसकी वजह से बॉल ब्रेक भी हो। तो ये वाली जो पिच अभी हमने पिच रिपोर्ट देखी थी, इसमें भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, इसमें बड़े पैचेस में ग्रास लगी हुई है, एक कंप्लीट कवर नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है लेटर ऑन भी ब्रेक होगा। तो इंडिया के पास चांस है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो आपने बात की थी, वसीम भाई ने बोला कि अश्विन को खिलाना चाहिए थर्ड स्पिनर के साथ, संजय ने भी बोला अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो अगर 3 स्पिनर्स के साथ इंडिया जाता है तो दे कैन ऑलवेज बैट फर्स्ट। यहाँ पे who will the drop अगर 30 में आइदर शामी ने 5 आउट किए will go to कल बैक टू वसीम में जिस तरह की सिचुएशन है इस वक्त चांस ले सकते हैं। Sorry, I interfere. We have to take you live to the stadium where the captains are ready for a toss. Well, the news out of Lucknow is England have won the toss and elected to bowl first. Misbah, interesting. रोहित शर्मा ने कहा कि आज टॉस जीत के हम पहले बैटिंग ही करते, जो इंग्लैंड ने उनसे करवाई है। And I just asked this question to Moin कि क्या आज इंडिया अपने आप को टेस्ट करना चाहेगा? What do you think? 2 चीज़ें हैं, एक तो ये भी हो सकता है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पिच, आई थिंक वो थोड़ा सा जैसे हमें लगा है कि सेकंड हाफ में टर्न ज़्यादा हो और हो सकता है बैटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाए। तो ये 2 रीज़न्स हैं मेरे ख़्याल में। और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी टीम इतनी कॉन्फिडेंट हो, हर चीज़ आपकी ठीक चल रही हो, सो देन यू आर कॉन्फिडेंट, कोई इशू नहीं है, आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। So you just said कि second inning में चूंकि ज़्यादा टर्न हो सकती है। It could be a due factor as well. We No, don't for England know. it could be कि यार दूसरी इनिंग में शायद ड्यू फैक्टर हो तो हम Yeah, but also England probably wanted the due factor and then wanted India to play out of their comfort zone. But India Yeah. also said the captain said कि अगर वो भी टॉस अगर जीता तो बैटिंग करता. And they're going with the same team. They're not playing extra spinner. They're going with 3 fast bowlers and 2 spinners with Right. Kuldeep and Jadeja. और ये दोनों आपके जो इंडिया के स्पिनर्स हैं, इन्होंने चीज़ें बड़ी टाइट रखी हैं जब ये आते हैं 20 ओवर के लिए। ये प्लेइंग 11 आ गई है इंडिया की। वसीम, टेक us through please. It's on your screen now. Yeah, it's the same side as the previous game. Rohit and Gill, they're in good nick. Rohit is in a smashing form. Virat Kohli, I mean, his scores have been 95, 103, 16 versus Pakistan, 55 not out, and then 85 versus Australia. Then Iyer is in good nick. Rahul is getting runs. Surya Kumar Yadav at 6. He hasn't got runs. Jadeja and Kuldeep, 2 spinners, and of course, 3-man pace attack led by Bumrah, Shami and Siraj. 3 fast bowlers. And Moin, take us through the English बेस्ट ऑफ मलान रूट सेम टीम खेली जो पिछले मैच में खेली थी। स्टोक्स, बटलर, लिविंगस्टोन, अली, वोक्स, विली, राशिद, वुड। पिछले मैच में जो टीम खेली थी वही टीम खेल रही है। उससे पिछले मैच में उन्होंने कुछ चेंजेस की थी इसके अंदर। अभी तक इंग्लैंड का अपना राइट कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं ढूंढ पाई है, प्रॉब्लम हो रही है। मे बी इसी में वन ऑफ द रीज़न कि उन्होंने सेम टीम खिलाई है कि एक गो दिया जाए इन प्लेयर्स को। तो मे बी बिकॉज ऑफ द पिच आई थिंक कि लिविंगस्टोन को इन्होंने रखा है टीम के अंदर, Right. कि बॉल स्पिन का चांस लें थोड़ा सा। All right, with that we're going to take a break on the pavilion, but when we come back we're getting closer to the action. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airways app. We're getting very close to the action in Lucknow, India versus England. मगर इस वक्त हुआ है expert predictions का, brought to you by Express Power. Right, Misbah, let's start with you. Your expert prediction. अकेला मोइन भाई से पूछ लिया करें, क्यों? उनकी ठीक होती है रोज। उनकी ठीक होती है, इतना बड़ा क्रेडिट। वैसे ही तो देखें आप वो कितनी कंसंट्रेशन के साथ हिसाब किताब निकाल रहे हैं। साडी भी ठीक होती है। चलो तुसी दस दो मेरी जगह। साडा बाबू India for me. India for Wasim. Misbah? India. वसीम भाई ने कहा है वही। वाह, this was lovely. इंडिया। India. This is ये। All right, on Shoaib Malik's behalf, I would put in India. तुम्हें इजाज़त लेनी पड़ेगी। भाईजान जास्त है। इजाज़त है। एक बार फिर। आज आपको इजाजत है। That's very cute, by the way. That's very cute. We had a fan from India who has finally caught up with him. Jazat. Actually, the word is ijazat, but there are certain people who call it just. Just है भाई। Just. So this friend, this fan from India, thank you very much. हमने कहा इजाजत है, जाजत है. So we appreciate that. Thank you for well, you caught up with it. Sir, just है. Just. India भाई मैं भी फिर लिख देता, ठीक है? Good boy. And those were your expert predictions. All right, time for the player to watch out for. Brought to you by Ufone. Right, G. Player to watch out for, Moin.
From me, it's Shubman Gill. Oh, Gill. All right, Shubman Gill. See? I'm thinking out of the box today. I think it's my go-to guy today's game is Kuldeep Yadav. Okay, Yadav. And for you, Misbah? Bumrah. Bumrah. अच्छा गाना आपने निकाला है Bumrah. All right, and sir, Jaste? Just. All right, I am going to say, I don't know why, but I'm saying this, Joss Butler. हैं? Joss Butler. टीम इंडिया Yes, performance तो कोई भी होता है, player to watch out for. नहीं सेफ चलते ना नहीं विराट सेफ कोहली। नहीं है, मैं दोनों तरफ keep यार, इसे कहते हैं hedging your bets. इसे कहते हैं दो कश्तियों में कदम. In other technical words, hedging your bets, right? फिर होता क्या है उसके साथ वो बाद में बता रहा है। हाँ, चले वो हम आपको बाद में बताते हैं. Those are your players to watch out for. Brought to you by UPhone. India batting first. Misbah, what kind of score are you anticipating? Are we going to see today? Are we going to see what we saw yesterday in Australia versus New Zealand? Because India plays that kind of cricket. Period. And Rohit Sharma ऊपर से आते हैं तो धमाके ही होते हैं. They can, but conditions को देखते हुए, pitch को देखते हुए मुझे लगता है कि ये वो pitch नहीं है. Anything close to 300 India. Normally यहाँ पे 244 average score है, यहाँ पे 260 something किया है, 63 Netherlands ने. But India with the batting quality, I think 300 के करीब कहीं अगर वो पहुँचते हैं या कर सकते हैं ऊपर भी, it will be a good total, very good total against England. Wasim, for the English fast bowlers, what line and length are they going to be aiming to engage India? Bilkul, it'll be difficult to stop unstoppable Rohit Sharma the way he has been batting in this World Cup, especially in first power play. So I suppose my advice / suggestion to England fast bowlers are, you got to bowl within the stumps. Margin of error बहुत कम है इस pitch पे, maybe spinners को नई ball से help करे, but Rohit Sharma रुकेगा नहीं. He will play his game. You see, players like Rohit Sharma, why they are dangerous? Because they are proper batters. Yeah. They are not pinch hitters. So अच्छी ball को भी जब वो shot मारते हैं, चौका लगता है, तो सारा जो pressure, stress वो bowler पे आ जाता है. All right, gentlemen, thank you very much. Moin, thank you. Misbah, thank you. Wasim, thank you. We are going to be back here in the pavilion after the game. Good luck to both the teams, and it's over to Lucknow.